संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। So let's continue our discussion on Sri Ramakrishna and his divine play. Now we are on chapter 4, the Master as a Guru, the concluding chapter in this regard. So, Saradananda begins with a discussion. What is the kind of knowledge which knowers of Brahman have? जिन लोग के हम लोग ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, उन लोग की ज्ञान की तरीका कैसे? What is the nature of that knowledge? How do we call them all-knowing? See, a person who is a knower of Brahman is supposed to know everything. Because there is also, as I said earlier in the Upanishad, there is a very famous question which a seeker is asking one of the rishis. Kasmin bhagavo vijñāte sarvamidam vijñātam bhavati. What is that knowledge? Knowing which everything becomes known. So, in reply he says, Ve veditavya. There are two things which are to be known. Paracha, aparacha. Something exactly like that. Both, see, knowledge is divided into two categories. Paravidya and the aparavidya. So, then it goes on to describe what exactly is paravidya, that which is everything that is within the domain of our normal, this perception, which is called, the whatever we can gather, including, grammar, chandas, nirukta, all those which can be acquired through our normal senses, capacities, they all come in the aparavidya. Paravidya, sa adhigamyate, that which goes beyond the aparavidya is paravidya, that is the knowledge of the ultimate, knowledge of the Brahman, knowledge of the Supreme. Now here he takes the argument, Sat Maharaj. The Vedas describe scripture, in the Vedic scriptures say that the knower of Brahman are omniscient, all knowing. सब उन लोग जानते हैं. तो इन्होंने because why? No false thought arises in their mind as they do in the minds of ordinary human beings. Whenever they want to know or understand anything, it immediately becomes visible to their inner vision and they become aware of its essential nature. So, उनकी मन में कोई असत्य कभी भी नहीं उदय होता है. हमेशा सत्य की आभास वहाँ, because it's always there is this the underlying truth in their mind. So, because of the linkage with the truth, only whatever that is true comes to their vision, comes to their understanding, comes to their knowledge, which in essence means the true nature of anything is revealed to them whenever they focus their attention, focus their mind, focus their eyes on anything. जब भी किसी के प्रति उन्होंने नजर देते हैं, हमेशा वहां से सत्य प्रकट होता है. क्यों? हमेशा उन मन की सत्य की तरीका है. It goes in the path of truth always. There is only the reflection of truth, and wherever they want, whenever they focus their minds anywhere, they immediately come to know of that. So इन्होंने भी लिखा, शरद महाराज, पहले भी हम लोग ऐसे सोच रहे थे, because we are just used to listen to the scriptures without really understanding their import. उसकी सचमुच की क्या
बताना चाहते हैं, नहीं जान के अनजाने अवस्था में हम लोग ऐसा सोचते थे, अरे इफ दे वर रियली ट्रू नोअर्स ऑफ ब्रह्मन, उन लोग की क्यों फिजिकल सेंसेस के बारे में इतना कम ज्ञान क्यों है? Why they are not able to say that, whether you could get news from United States with the help of electric power within 4 or 5 days. अभी तो उसी समय टेलीग्राफ की आविष्कार हुआ था. So why they are not able to say it takes so many days, now it is possible? कैसे हवाई जहाज में क्यों नहीं जा सकते थे? All those things, why they are not able to predict? This is what we were saying. That is why no, it is not correct to say that they are all knowing. Because no, हम लोग you see, that is also true, all our understanding, our estimation of anything, any knowledge, any science, any reality, any truth, everything is, we always measure it in terms of our paradigm, our own areas, our own capacities, our own parameters. इसलिए सेंसेस की द्वारा, इंद्रिय द्वारा गृहित ज्ञान, उसी को हम लोग ज्ञान समझते हैं. So we say that oh, these are all available now. क्यों पहले क्यों नहीं इन लोग जानते थे? इसलिए उनका ऐसा नहीं कहना ठीक नहीं है. Omniscient, all knowing कहना ठीक नहीं है. But then he says, after listening to the master, we realize that you will fail if you try to understand the scriptures in that manner. So the master explained it by using a couple of rural examples. साधारण वैसे उन्हें महाराज ठाकुर करते थे, साधारण जागतिक कुछ लेके उसी से कोई ऐसा बता देते थे, समझ में जल्दी आ जाता था. This is the idea, the scriptures saying that knowers of Brahman are omniscient. कैसे सिद्ध हुआ? उन्होंने एक दो चीज बताया. अब जब यही पकाते हैं चावल, आप तो अब क्या सिद्ध हो गया कि कैसे आपका ज्ञान होता है, कैसे पहचानते हैं? आप एक दो लेके आप देखते हैं, उसी से पता चलता है. You don't have to press every rice particle to say that it is cooked properly. Why is this? You take one grain and press it between your fingers. You instantly know whether all the grains in the pot are soft. Why is this? You haven't pressed all the grains one by one. How then do you come to the conclusion? Similarly, by examining 2 or 3 things in the world, one can know whether the world is eternal or transient. So you see, जगत में मान लीजिए आप हजारों लाखों करोड़ों चीज है, लेकिन उसका सचमुच उसके अंदर क्या है, इसकी तरीका क्या है? What is the nature of whatever we see, observe, experience in this world? So इसी क्या है, किसी देखने के लिए काष्ठ से बना हुआ, किसी दूसरी चीज से, पदार्थ से, लोहे से बना हुआ. So many things are made of ever so many items and all that. But in nature, intrinsically, एक क्या है? Whether it is of the nature of permanence or of the nature of transience, impermanent or permanent, ये दो चीज. So you see, you keep on dividing, taking them to more and more of their fundamental nature. मान लीजिए आप you take चीनी और मैदा लेके बनाते हैं. अब you make this shape, that shape, so many shapes, so many colors, वो कुछ रंग भी चलाते हैं. But essentially what is that? Inside is only चीनी and मैदा. आप एक मिठाई लेते हैं, आपकी सब हजारों चीज देख के पता चल नहीं, सबके अंदर एक ही चीज है. इसकी ज्यादा थोड़ा फ्राई हुआ, थोड़ा कम फ्राई हुआ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं डाला, लेकिन but essentially it is made of this मैदा and चीनी. Like that, they understand the world in the essence. सचमुच क्या है? One can know whether the world is eternal or transient, real or unreal. A man is born, lives for some time and then dies. The same is true of a cow and a tree. And thus observing one thing after another, you come to the conclusion that whatever has name and form follows the same law. The earth, the moon, the sun and so on have names and forms. They are all therefore subject to the same law. So you became aware that everything in this universe is of a similar nature. Don't you know then the nature of everything in this world? When you thus realize the world is transient and unreal, you can't love it anymore. You will remove it from your mind and it will be without desire. As soon as you give up the desire for the world, you will see God, the source of the world. So when a man has the vision of God, tell me, is he omniscient or not? So
यही तरीका आर्ग्यूमेंट ठाकुर देते थे। तो आप जगत में एक चीज देखा, इसकी सचमुच ये अनित्य है, दूसरा देखा ये भी अनित्य है, एक दो देखने में आपके सहज में अनायास से पता चलेगा इस जगत में धरती पे कितनी चीज हम लोग देखते हैं, सबकी स्वभाव है अनित्य है, 2 दिन के लिए विनाश प्राप्त करने वाले हैं। इस सहज में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसमें इसकी क्या होगा, इसकी परिणाम धीरे धीरे आपकी जागतिक सबके प्रति आप हमेशा इसमें ध्यान रखते 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 किसी चीज के प्रति आकर्षण, आपकी इच्छा, डिजायर, वासना धीरे 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 कम होने लगे। तब बिल्कुल जब हट जाएगा, इफ यू आर फ्री फ्रॉम दैट वासना, मुक्त सब हो जाएंगे, देन इसकी क्या है, उसके प्रति आपकी सचमुच ईश्वर की दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। एंड वंस यू नो गॉड, क्योंकि भगवान ही तो ये सृष्टि करता है, इस जगत में कितनी चीजें सब तो भगवान ही किया। अब भगवान की जानने के बाद में, उसके बाद में जगत में कुछ अनजाना कुछ रहेगा क्या आपका? कुछ नहीं रहेगा। नथिंग रिमेन्स अननोन वंस यू नो द क्रिएटर who is the source of all knowledge, all creation, who is everything. So that is why the idea that Vedas say something is omniscient, this is. और दूसरी भी किसी जगह में कोई कहा तो श्री रामकृष्ण ब्रह्मज्ञानी, वो क्या प्लेन चला सकते हैं? साधारण चीज से वो तो कुछ नहीं पड़ा, संभव नहीं है, लेकिन उनका इतना तीक्ष्ण बुद्धि, सचमुच चाहते तो संभव है। If a knower of Brahman wants, it's possible. मैं साधारण में देखा, हम लोग के अंदर एक महाराज, इतना वो छोटी उम्र से ही बाहर निकल गए थे, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट हम लोग जानते थे। उन्होंने कहा गया कोई कंप्यूटर, पहले वो कंप्यूटर कोई बारे में कुछ नहीं जानता था, वो कुछ देखने लगा तो आप कोई थे, उनको कुछ बता दिए, नहीं नहीं आप जानते हो तो खराब हो जाएगा। उन्हें सीधा घर वापस आ गए। 3-4 महीने के अंदर पूरा कंप्यूटर खोलना, असेंबल करना, कैसे छोटे छोटे पार्ट से बनाना, पूरा उन्होंने सिद्ध प्राप्त कर लिया ज्ञान। See, if your mind is concentrated, wherever it is applied, it can capture and know that. Only thing is, you see, in the case of extremely advanced souls or realized souls or आधिकारिक पुरुषार्थ, उनके क्या होता है, वहाँ उसकी नजर फैलना ही मुश्किल है। See, if you want also, he will also come later on. His fact also will come. कभी वो दूरबीन देखना चाहते थे ठाकुर, माइक्रोस्कोप, इन बहुत कष्ट करके उनको ले आया, रखा, लेकिन ठाकुर नजदीक भी थोड़ा गए, लेकिन वापस आ गए, नहीं देखा। उसे 3-4 घंटा कितना समय तक वो रहा, नहीं मेरा मन नहीं उतार रहा है, इट इज नॉट कमिंग डाउन एट ऑल, इट इज इन सच ए स्टेट, इट कैन नॉट कम डाउन, वापस उनको ले ही जाना पड़ा। So you see, when the mind is, you know, when the apparent unreality is so strong, जैसे आप मान लीजिए आप साधारण एक आदमी है, थोड़ा आपकी विचार थोड़ा ठीक है, मान लीजिए आपके कोई बीमार है, मान लीजिए मेरे तरीके से डायबिटीज है, बहुत ही बढ़िया स्वीट, लेकिन आप देखने में आपको पता है कि मेरा तो इसके लिए मेरा तो ये विष है, इट्स अ पॉइजन, सो इमीडिएटली यू रिजेक्ट इट। Although it is so attractive, so good, you can take it, you can take 10 pieces also if you want. Why? Similarly, when the mind goes to higher and higher states of awareness, it cannot bring it down to bear on what we call as existential knowledge. इसीलिए उन लोग के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना, प्लेन चलाना सीखना, ये सब कुछ नहीं है, but they cannot put their mind to such things. So I have seen, if they want, how even sadhus, ordinary sadhus, थोड़ा ध्यान देने में कैसे प्राप्त कर लेते हैं कई तरीका ज्ञान। सो इफ दैट इज सो, ए पर्सन हु इज एन नोयर ऑफ ब्रह्मन, उनका कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली बिकॉज सी स्वामी जी ऑल्सो, दैट इज व्हाई नो स्वामी जी ऑल्सो गिव्स ए न्यू आइडिया ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं स्वामी जी? इफ आई हैव टू डू अगेन, आई विल कंप्लीटली अनलर्न व्हाटएवर आई हैव लर्न। जितनी मैं प्राप्त किया शिक्षा सब मैं भूल जाना चाहता हूँ, अभी नया क्या है, एकाग्रता शिक्षा प्राप्त कर लेता हूँ, उसके बाद में जो मैं चाहता हूं जहां से भी हो मैं ले सकता हूं। Whatever I want, I can gather facts at will once I master the art of concentration. So इन लोगों की concentration की तो बाप है इन लोग, those who are real knowers of Brahman, Thakur can for hours he can be immersed. That means what? The mind is at supreme level of concentration. Wherever it keeps its vision or nazar,
like a searchlight, it reveals completely. उसके अंदर क्या क्या है पूरा पता चलेगा. The whole thing becomes totally revealed to such a mind because it is so powerful and so capable. But it's very difficult to bring. इसीलिए if they bring the mind down, then it is gone. Immediately then it will get entangled slowly. Then it will become again full of vasana. Slowly, इसीलिए इसी भटक जाना, इसी घिरना, इसी is called patan in spiritual language. Once the mind gets into that, it is gone. That is why, when they talk of Guru, Shrotriya, Brahmanishta, Akamahata, उनकी सब काम की सब खत्म हो चुका है. Absolutely, that's why, how can a Shrotriya or Brahmanishta, उसकी बात क्यों अकामहata कर रहे हैं? Even if we are Shrotriya, even if we are a Brahmanishta, there is a chance that we are coming down into the existential level. किसी तरह भटक आप किसी की प्रति आपकी नजर जाएगा, खत्म. So that is why they have said it is not enough if you are a Shrotriya, if you are a man of Shruti, you have listened and you can retain, and if you are established in this Brahman, no, you should be completely free from desires, akamahata. So such a mind can never have desire, and once it does not have desire, it's not possible to apply that mind, however powerful it is, to gather existential knowledge. एक जागतिक कुछ ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, वही तरीका मन लेके. So, when the master explained it, we understood. This is indeed, a knower of Brahman becomes omniscient in a way. When we know the origin, the middle and the end of a particular thing, we say we have the knowledge of the thing. कभी कैसे उत्पन्न हुआ, बीच में क्या स्थिति है, अंत में क्या है, आप जानने में, आप जानते हैं मैं इसके बारे में पूरा जान लिया. If that is the idea, then we know that we have learned, we have mastered that. So, if one knows the world in the same way, that too is knowledge. That understanding is equally true of everything in the world. So one should consider knowledge of all objects of the world. One is endowed with that knowledge, is indeed omniscient. Therefore, what the scripture says is quite true. So, इसमें क्या है? ऐसे नहीं है आप कोई आपकी ये माइक्रोफोन देख रहे हैं, इसमें क्या क्या पार्ट से बना हुआ, इसमें कितना वोल्ट है, कितना वोल्टेज है, कितना कौन स्विच है, ये है. That is not, that kind of detail of the empirical knowledge is not knowledge. वो खूब broadly जानते हैं, such people, the moment, because everything in a trice they know that everything is of the nature of impermanence, so त्यागना है, इतना उन लोगों को पता चलता है. So in that sense they are omniscient because they know essentially the nature of the entire existential universe. ये सारे जगत का क्या है इसके अंदर, इसके स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, सच में क्या है, that idea is totally clear to them. So they are not bothered about the details. इसमें क्या है, यंत्र के अंदर क्या क्या है, वो जानने का उन लोग जरूरत ही नहीं पड़ता है. Because the moment जब भी इसके बारे में दृष्टि फैल रहा है वहां, immediately it reflects, no, this is something, it's totally perishable, इसके बारे में मत छोड़ो, इसमें ध्यान मत दो. So immediately the mind withdraws, knowing that in a trice it knows this is again one of those millions of imperishable things which try to attract the world and all its beings. एक मुहूर्त में इसके त्याग करना. But if they want, if such a mind wants to go deeper, मान लीजिए हम लोग को कोई शिक्षा प्राप्त नहीं है, 10 घंटे लगे, उनके 10 मिनट भी नहीं लगेगा. Even at 1/100th of the time or a 1/1,000,000th of a time, the sharper the mind is, faster it is able to learn, attract, grasp. So हम लोग हमें see this kind of differentiation we see even in the normal world. किसी को समझाने का 1000 बार समझाना चाहिए. क्यों? मन सुनते सुनते इतना भटक रहा है, पूरा नहीं सुन भी पा रहा है. When you say something, you are talking straight to that person. He is looking at you. The mind has gone. It is so chanchal. और ठीक सुन भी नहीं पा रहा है. Immediately the mind goes elsewhere. You have to tell him twice, thrice, and that person also again क्या बोला. But some people आप मुंह खोलने की पहले ही उनका पूरा पता है. नहीं ठीक है मैं समझ लिया. Why? That mind is more concentrated, more powerful, a more organized mind. तो ज्ञान जिनकी प्राप्त हो तो लाखों करोड़ों गुण अधिक कॉन्सेंट्रेटेड है. सो यू नीड नॉट इवन से आप खड़ा रहे सामने, ऐसा होता नहीं कोई आपके खड़ा रहा है, वो इसीलिए आया तुम ले चलो, बोलते ना कोई आया आपके, कोई नौकर आया, आप जानते हो आया,
मुंह देख के आपको पता है वो कोई पैसा चाहिए, ले चलो, आके वो उसकी साफ करना चाहते हो करो, why we say because we know over the handling all that the mind has become sensitive. उसके बाद इस समय क्यों आया, यही पूछने के लिए आया, वो कुछ नहीं बोला, आके खड़ा रहा, आप तुरंत बताते हैं. So similarly the mind when it becomes sharper and sharper, it is able to understand, dissect, analyze and find out. So in that sense it is a knower, not in sense of detail. इस चादर के अंदर क्या क्या इसके ववन है, what all it is made of, what are the different colors, कौन sheep wool ना goat wool ना क्या tiger wool ना क्या, no need. They know that this is इसकी क्या तरीका क्या है, what is the basic nature of this, बस that is enough. So when that means it's also a great facility. आपकी जगत में हम लोग का रहने का दिक्कत क्या है? The mind goes into 1001 unnecessarily details. इतना हम लोग जी व्यावहारिक ज्ञान के प्रति इतनी नजर हम लोग देते हैं, that is why the mind gets more and more complicated.